clear and the screen is visible. Cool. We'll gonna wait just couple of minutes more and then we'll start. Uh, Let me tag few people. Cool, cool. Uh, let's start. Okay. Hmm. Okay. So, welcome to the Android course. Uh, we are in the week 3, and today we are gonna learn about navigation in course. Okay, one of the most basic thing that is required in an Android project, but one of the most uh, difficult ways of handling things when the thing scales. Okay, we're gonna discuss it in a much more detail, but let's move forward. Okay, so for today's content, we're gonna learn about what was the traditional way of doing navigation in Android. What is the current way of doing navigation? Okay, we will be learning about little bit of backstack, okay, and little bit of animations, okay, transition animations in general. Okay, I hope I am audible to everyone. Just to check. Cool. Okay. Okay. So, uh, how many of you here have worked with lots of activities in Android? Okay, only one of them. Okay. Uh, cool. So, before jumping into that, I'll share. I think there, yeah, I forgot to share this slide, but uh, this week is all about project week. Okay, we're gonna learn few things that will be required to build our first project of this course. Okay, so I'll just showcase what we're gonna build today. Okay, so this is the app. Okay, uh, this is the initial screen. Okay, if I navigate to the search screen, you can see a small animation will happening. Okay, and if I select any player name, okay, from here, okay, then I'm gonna take that data that has been selected and navigate to the different screen. Okay, so you can see the animation been working, and we are gonna going to build this for today. Okay, so
I was talking of what is the. Just a second, I'm getting a call. Okay, so sorry about that. Ha. So I was saying we're gonna look into the traditional way of how the navigation was used to happen. Okay. Let me bring my whiteboard. Okay. So uh, at the initial beginning of the Android development. Okay. I hope my screen is visible. Cool, cool. So, at the beginning of the Android development, we generally used to do navigation based from activity to activity. Okay. Later, if you all remember, I mentioned you to do a navigation trick assignment from activity to activity and observe the life cycle method, right? So, if somebody have done it, they can react via an emoji. Cool, cool. Okay. So that was the traditional way of how the how that navigation used to happen. Okay. Then with the problem with this approach of having multiple activities, increasing lots of complexity, Google introduced fragment. Okay. Then we used to have a single activity, and then in the activity we used to have multiple fragments. Okay. Okay. Now, though we are not covering fragment in this course, as the fragments are not generally used much in a industry nowadays, especially if it is a newer modern app, or if someone is creating a new app. Okay. But currently what we have activity. Okay. And as we are now aware about the recomposition, we have composables. Okay. So now we navigate from composables to different composables. Okay. So we just gonna have a look how previously it was used to done. Okay. And now how it is now how we are handling it stuff. Okay. So I'm gonna close close this project. Okay. I'm gonna create a new one. Just a second. uh, okay, let it build. Meanwhile, I didn't get a submission from Onkar. I think from Anand as well, Vishesh as well. Am I correct? Hello, Vishesh, Anand, you want to? Any specific reason why we haven't made any efforts to start with the assignment? Okay, okay, Vishesh, but uh, this is not. Uh, I don't think this is a valid reason that you should not be working on your assignment.
uh, but also at the different side, I don't know what work you might be got involved in, but I will keep saying keep on working on the assignment. Though if you are lagging behind, then there might be chance that by the end of the course, you might be at the uh, stuck situation where you get overwhelmed with what to do and how to implement and all that stuff. So the same to on car as well. Keep practicing, keep pushing. Um, Generally, I don't like asking about those things again and again. It's up to you how much effort you show and put. Okay, so um, I will just recommend to follow up what has been shared in the group or in the sessions. Okay, but again, it's up to you. Uh, you can do as per your convenience. Though, if you all uh, are not aware, based on the assignment involvement and how much you give input, you might be getting internship. Okay, so that's how you will qualify. Okay, cool. So I will just remove this greeting composable preview, or it is not required. What I'm gonna do, I'm gonna create a new activity. I'm going to here arrive at acha I use shortcut control n. Okay, and then I can search for activity. Okay, though Android Studio provides you different commonly used activities, but I'm gonna just select the gallery one and just select this empty activity with the compose sign. Okay, so I'm gonna hit next and I'm gonna name it activity 2. Okay, I'll just finish it and wait for it to get completed. Okay, now we have activity 1. Let me just run it. We have activity 1 and we have activity 2. Okay, now how I wanted to navigate, what I'm gonna do, I'm gonna create a button here. uh, Instead of this, I'm gonna label it with the button. Okay, and put it inside this. Okay, and we have this hello android text. Okay, and in on click, what I'm gonna do, I'm gonna take the context. Okay, uh, context is equal to local context dot current. Okay, so basically what is context, if you're gonna ask this to a professional android developer, he or she might also not be able to give you a rigid answer. The reason being, this context is a very much huge topic in itself. Okay, but generally in short term, if I say anything related to this activity been populated, it gives us the current activity been populated, the context give information about that only. Okay, and this context is been implemented by android operating system only. Okay, we don't have much control over it, but most of the stuff happens through this context only. Okay, generally in composable, we generally access the context using this handy method. Okay, so I will do context dot start activity. Okay, and in the intent, I will create an intent object. Okay, I will provide that context. Okay, and I will provide that I wanted to jump into activity to class dot java. Okay, so basically if I wanted to navigate from one activity to another, this was the boilerplate code that we used to write. Okay, specifically not like this, but some way it was involved with the intent. Okay, and with the start activity function. Okay, now if someone is very curious about those things, I'll like to share few more info on this. Basically, if you try to read about intent, you will get to know there are lots and lots of stuff
that you do with this intent class. Okay. um, just to bring the curiosity, uh, for example, when you generally tap a share button over a YouTube app or over a Instagram app, where it gives you option to share with the different apps, okay, the selected content that can be achieved through this intent class only. Okay. So this intent class is very interesting. It's in part of an Android OS level. Okay. And you can see it comes under Android content class. Okay. So you can always have a look into that. It will add up to your vast knowledge. Okay. So on the button click, I will just start an activity within providing with the intent कि मैं ये करना चाहता हूँ whenever a start activity method get called. This is my intent to populate an activity. Okay. Now if I hit run, okay, now we have a button, very ugly looking button. Okay. I will tap on it, and you can see I have shifted to hello Android class activity. Okay. I will name it as activity 2. Okay. This is activity 2. Okay. And if I gonna run it again, okay, I pressed it, and we are in second activity, which is called this is activity 2. Okay. So if someone was not able to complete that assignment, I will now recommend it to do it likewise. Okay. And in each activity, okay, try to override the different methods. Okay. And try to have a look into that. Okay. Yeah, Harsh, go ahead. Harsh, you want to say something as you have raised your hand? Sir, am I audible? Yeah. Sir, previously when I used to pass intent, like instead of giving context, I used to pass this and at the rate and the activity name. So, like, is it the wrong way? No, you might be doing something like this. Well, intent is equal to intent, and then providing stuff, and then used to do intent dot start activity and then do the stuff, right? That was a more another traditional way of passing the activity, because this start activity has been, I believe, has been uh, introduced new or somewhat somewhere related to compose. Then I am able to do something like that. But Sir, I that was talking about the context, like the context you pass in local context dot current. So, haha, what I used to do that instead of passing the context, I used to write this and at the rate the main activity. this at the rate main activity, like this. Yes, sir. I think uh, But it that does not happen like this. Like you are passing in start activity now. So I used to use the dot also function and started the activity with that. So in that it runs. But when I start in the start activity and pass the intent within the start activity, then it does not happen. okay, okay. Like you can see when I'm in the on create method, okay, basically inside the class of activity, then I'm able to use the context of this activity like this way. Okay. Like this way. But currently why I'm not able to do that, because I'm currently not in the context of main activity direct. I'm in the scope of a composable right now, right? Yes, I don't have a context to main activity directly. But what we can do, because we are using this context uh, helper method from the composable, what it is doing, whenever it get inflates, based on that it gives us the context. Okay. So
directly or indirectly we are using the main activity context here. The reason being why it is not working and not functional, you can send me the snippet over the DM or in the group. We can have a discuss. Okay, Sure, sir. Thank you, sir. cool. Okay, so traditionally, this thing used to happen that we used to change activity likewise and keep on adding more and more activity. Okay, if you are aware about the thread app, this thread app that been launched by Instagram or the Meta, if someone have heard the news of it, thread app was initially using 107 activities inside them. Okay, and people were saying that it was a very old project, been migrated and done lots of stuff. Okay, but again, you might also be aware that nobody is using threads nowadays, right? Not because it was not optimized or something, it because the idea was already been implemented. Okay, so generally companies like such a large level used to do that stuff. Okay, but that was a traditional way. Google don't recommend it. Okay, they recommend doing transition from one composable to another. Okay, now this is the modern way of doing a navigation using composable. Okay, so if I explain it you through a diagram, generally this is our activity. Okay, main activity. And whenever I create a whenever I create a new screen, full size, full width screen, generally when we do the navigation logic, it generally takes up the all the space available in the activity window, and then we are able to inflate it likewise. Okay, but ऊपर से वो देख के ऐसा लगेगा कि नई स्क्रीन है, बट एट द एंड इट्स जस्ट अ फंक्शन विच इज शोइंग अ कंटेंट. ओके, स्क्रीन एक ही है, बस उसके ऊपर हमने लेयर डाल के रखी हुई है. ओके, so if I populate one screen, okay, and if I do the other, it generally एक के ऊपर एक through the stack get populated like this. Okay, okay, so currently the way of doing navigation is using composable. Okay, and it goes generally one above the other. Okay, like this in the memory. Okay, 1 2 3 4. But if you are not able to get it in a this drawing example, let's see how we can implement it using our code base. Okay, now navigation component, uh, when Android team got to know that with using composable it can leads to like more than 100 screen, 200 screen. Okay, so they have come up with a solution to maintain it in a large scale. Okay, so when they come up with this solution, they also come up with few terms that we need to understand in order to implement it. Okay, so talking about the those components, meanwhile I'll share the official document of it. Okay, so uh, we will gonna come back to this part in just in a second. Okay, so we're gonna first talk about the just a second, nav host. Okay, design your navigation graph. Uh, cool. Okay. They have not mentioned it here. Okay, I'll gonna explain you one by one. Okay.
So basically, nav graph is a graph that we provide to the host. Okay, I will let you know what is host. Okay, so what this whole navigation system is all about. We have a giant nav host. Okay, जब आप होस्ट के बारे में समझते तो you understand that someone is taking the control, and whomever is coming and leaving kind of managing it. Okay, so we have a vast nav host. Okay, which takes a graph. Okay, which takes a graph. Graph is nothing but uh, generally a tree of composables. Okay, so it manage a tree of composables, and this can lead to a very complex, very large graph as you want it. Okay, so uh, nav graph nav graph is generally lots of composable linked directly or indirectly to each other. Okay, so for example, if you are coming from a login page. Okay, login page to home page. Okay, home page to different pages based on uh, if a user is a premium user or a regular user. Okay, premium user will have a different nav graph, uh, and normal user will be having a different nav graph. Okay, so based on your requirement you can do whatever the stuff you want. Okay, so generally we have this nav graph component of various composables. Okay, which get hosted over this nav host. Okay, so with code we'll gonna see it in a proper detail. Okay, so just try to understand nav graph is a collection of a composable. Okay, which each composable represent like a screen. Okay, now just a second. Okay, uh, we'll see how we can define this nav graph in a nav post. Okay, so let me just clear it out. Okay, so uh, let's get back to the documentation. Okay, we need to first install those classes, install those classes from this library. So I'm gonna copy it. Okay, I'm gonna come here. Okay, and go to the Gradle file in the app level. I'm gonna scroll down. Okay, okay. So those are the library or the framework or the extra packages that you import from the outside of the project. Okay, which is generally denoted with this implementation method. And in the test directory, whichever packages you use to test your classes. Okay, we generally annotate with the test or android test based on different requirements. Okay, this debug implementation is generally used for the tooling part. Okay, and other stuff. Okay, so as we wanted to import the navigation logic, we're gonna use this implementation. Okay, this is the new Kotlin DSL way of writing things. Okay, and I'm gonna extract this function as this version as well. Oh, 2.7.7. Okay, I'm gonna format it, and once you do any change in this Gradle file, you have to do this sync now operation. Okay, cool. So our file has been imported. Okay, so I'll just uh, come to the main activity. Okay, uh, instead of a scaffold. Okay,
I will create a nav host. Okay. Now, as I was speaking, nav host is a container which act as a host for different screens that you wanted to get populated or inflated uh, in the app. Okay, but you can see this thing is taking quite of parameters that we need to give in order to remove the errors. Okay, now as we need a nav controller. Okay, I'm gonna just talk share more about the navigation controller in a second. Okay, let me create it first. Is equal to remember nav controller. Okay, once created, I will create a nav controller here. Okay, now uh, just to give you a analogy of it, let's say we have a restaurant. Okay, okay, we have multiple tables. Okay, let's say table number 1 2 3. Okay, 1 2 3 4. Okay, and generally in a very good restaurants or hotels, you can see there is a one manager. Okay, that manage all the stuff in that hall. Okay, now you now generally there are various uh, employees. Okay, uh, based on the input given from the outside, that is from the manager, they do certain stuff over the different tables. Okay, so uh, the navigation framework for the compose is something similar like this. Okay, we in the place of hall we have nav host. Okay, in the place of the table we have composables. Okay, and in the place of the manager we generally have a nav controller. Okay, which controls all the navigation happening inside this nav host. Okay, so nav host is nothing, just a container which hosts multiple composables. Okay, and we have a controller. Based on that we control what composable we wanted to show or not. Okay, so let me know, are we able to understand about the nav graph and nav controller and nav host? What about other? Tulika, Raj, Deepak, Darshni. Okay, okay. uh, let me start from the very basic. Okay, तुलिका, हमने ये पढ़ा था ना कि अगर एक कंपोजिबल का हम स्टेट बदल दे। अरे, हमने ये पढ़ा था। अरे भाई, गायब मत हो जाओ भाई, एक सेकेंड। ओके, हमने पढ़ा था कि एक कंपोजिबल का एक रिस्पेक्टिव स्टेट होता है, राइट? एक डिफॉल्ट स्टेट होता है। अगर मैं किसी बटन क्लिक में मैं उसका स्टेट चेंज कर दूं तो वो कंपोजिबल पूरा का पूरा चेंज हो जाता है, राइट? इतना हमें ध्यान है। कूल। ओके, नाउ वही चीज हम अब कर रहे हैं बड़े लेवल में। ओके, रेदर देन क्रिएटिंग अ बॉक्स, ओके, ऑफ लेट्स से 100 डीपी और वेरी स्मॉल साइज, अब हम इन बॉक्स को इतना बड़ा बना रहे हैं कि इट इज एक्टिंग एज अ लाइक अ स्क्रीन। ओके, हम हमें जैसे लॉगिन स्क्रीन से अगर मेरे को होम स्क्रीन में जाना है, ओके, तो in your assignment you might have created a lots of composables, right? So अब हम क्या कर रहे हैं, एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में जा रहे हैं ना, तो इन सब चीज को मेंटेन करने के लिए हमें एक सिस्टम चाहिए। ओके, अब हम सिस्टम कैसे बनाए हैं,
हमने सिस्टम में कहा ये हमारा सिस्टम है जिसको हम नैव होस्ट बोलते हैं। ओके। ओके। अब इस सिस्टम में बहुत सारे छोटे छोटे कंपोजेबल्स हैं। ओके। ओके। जिसको हम पर्टिकुलरली अभी के लिए फॉर सिंप्लिसिटी बोल सकते हैं कि ये स्क्रीन 1 है, ये स्क्रीन 2 है, ये स्क्रीन 3 है, ये स्क्रीन 4 है। ओके। नाउ ये नैव होस्ट के अंदर होस्टेड है इनसाइड अ नैव ग्राफ। ओके। नाउ दोज आर द कंपोजेबल्स। ओके। नाउ हमने एक होस्टिंग प्रोवाइड कर दी, कनेक्शंस डिफाइन कर दिए। ओके। नाउ अब हमें इसको बाहर से कंट्रोल करना है, तो हमने एक नैव कंट्रोलर बना लिया है। ओके। सो व्हाट इट डज, जैसे एक मैनेजर एक रेस्टोरेंट को मैनेज करता है ऑब्जर्विंग ऑन इट्स बेसिस, दिस मैनेजर इज नॉट सिंपली अ डेवलपर। ओके। तो नाउ डेवलपर इज मैनेजिंग कि हमें कौन सा स्क्रीन देखना है कौन सा नहीं, यूजिंग दिस नैव कंट्रोलर which is hosted in a nav host. Okay. And whatever this composable we defined in a nav graph. Okay. अब हमें समझ में आया what we are doing. Cool. जिसको नहीं आया डोंट वरी, वी गोना सी इट इन अ एग्जांपल, तो चीजें क्लियर हो जाएगी। ओके। सो कमिंग बैक टू द कोड कोड बेस, मैंने एक नैव कंट्रोलर बनाया। ओके। दिस इज गिवन बाय द लाइब्रेरी वी इंपोर्टेड। ओके। बाय द लाइब्रेरी वी इंपोर्टेड गिवन बाय द कंपोज। ओके। दिस इज act as a act as a manager. Okay. This nav controller. Okay. Now this is act as a hall of a restaurant, this nav host. Okay. It hosts basically all the screens, and based on what we populate, it brings that into the top of the layout. Okay. Now you can see I have this nav graph builder lambda. Okay. अगर इस nav host को खोलूं, तो you can see we have nav controller, a start destination, and a builder. Okay. Which is of type nav graph builder. Okay. Taking nav graph as the return type. Okay. So अभी के लिए मैं यहाँ पे होम प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके। द स्टार्ट डेस्टिनेशन ऑफ दिस नैव होस्ट एंड द डिफॉल्ट डेस्टिनेशन ऑफ दिस नैव होस्ट विल बी अ होम स्क्रीन। ओके। नाउ मेरे को होम स्क्रीन दिखाना है और वो कंपोजेबल में दिखाना है, तो व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना राइट कंपोजेबल। ओके। ओके। एंड इन द राउट आई विल गिव इट द home route. Okay. And in the content I will create a new Kotlin file, not class, a file. I will say it home screen. Okay. मैंने home screen बनाया, मैंने composable बनाया, I will name it as a home screen. Okay. And मैंने इसको column बनाया। Okay. कॉलम में मैं कुछ आर्ग्यूमेंट्स इसको दे देता हूँ विच इज नीडेड। मैंने फिल मैक्साइज किया ताकि ये स्क्रीन की पूरी साइज जितनी अवेलेबल हो वो ले। ओके। और क्या करना था, हाँ, मैंने वर्टिकल अरेंजमेंट सेंटर दे दी। ओके। एंड मैंने वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेंटर दे दी। ओके। नाउ हियर आई एम क्रिएटिंग अ बटन। ओके। इसको अभी टू डू रहने देते, एंड मैं इसको टेक्स्ट दे देता हूँ होम screen. Okay. To just look very nice, I will name it as a welcome home screen. Okay. Now uh, in the composable I will now return the home screen. Okay. So if I just run it, let's see what will be the output. Now instead of the greeting text, now we are seeing the home screen.
अब आप पूछोगे क्यों? द रीजन बीइंग कि हमने इस नैव होस्ट को बोला कि जो पहली चीज आपको सर्व करनी है वो है होम राउट। ओके, और मैंने कंपोजेबल को ये होम वाला राउट दे दिया है। सो सो नाउ मैंने जब नैव होस्ट को होम बताया तो इसने अपने ग्राफ में देखा कि कहीं होम नाम का कोई कंपोजेबल है कि नहीं। उसने देखा कि होम नाम का है एंड उसने वो पूरा स्क्रीन को पॉपुलेट कर दिया। ओके, चिट्ठी काट रही। ओके, नाउ व्हाट आई एम गोना डू, अब मेरे पूरे ऐप में एक स्क्रीन तो होगी नहीं, मेरे ऐप में मान लो बहुत सारी स्क्रीन होगी, राउट राइट। नाउ अगर मैं इसको रन करूंगा, ओके, नाउ द नैव होस्ट कैन गेट कंफ्यूज कि भाई होम इसने बोला तो है बट होम के तो तीन चार है, राइट। तो वी नीड टू चेंज द राउट एज पर द स्क्रीन यू वांटेड टू शोकेस। ओके, मान लो आपको होम के बाद सर्च स्क्रीन चाहिए, तो यू विल नेम द कंपोजेबल राउट नेम एज द सर्च। आपको प्रोफाइल स्क्रीन चाहिए तो यू विल क्रिएट अ प्रोफाइल स्क्रीन। ओके, now what I'm gonna do, I will gonna copy it, I will name it as um profile screen। okay, uh, यहाँ चाहिए। okay, and I will name it as a profile screen। okay, and I will name it as welcome to profile screen। okay, now similarly I will create a different screen in the name of search screen। okay, so I will give it a name search screen। okay, and I will name it as search screen। okay, welcome to search screen। okay, now in the nav host अब मेरे पास बहुत सारी स्क्रीन हो गई है और मेरे को उसका स्पेसिफिक राउट बनाना है। तो मैंने क्या किया, होम में होम स्क्रीन दे दिया, सर्च में मैं इसको सर्च स्क्रीन दे दूंगा। ओके, एंड प्रोफाइल में मैं इसको प्रोफाइल स्क्रीन दे दूंगा। ओके, नाउ नाउ अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने अभी तक हमने एक नैव होस्ट बनाया है। ओके, एंड नैव होस्ट में मैंने तीन स्क्रीन देके अभी तीन स्क्रीन का ग्राफ बनाया है, राइट। ओके, so to be name it as specific, this is the home screen, this is the search screen and this is the profile screen, right। now मेरे को इसको यहाँ से यहाँ नेविगेट करना है, यहाँ से यहाँ नेविगेट करना है, यहाँ से यहाँ नेविगेट करना है। तो मेरे को एक कंट्रोलर चाहिए, ओके, जो डेवलपर बाहर से यूज करके उसको कंट्रोल कर सके, राइट। so in that case the nav controller comes into the picture। okay, so मैं चाहूंगा कि मैं सर्च स्क्रीन में अगर जैसे मैं होम स्क्रीन के इस बटन को क्लिक करूं तो मैं सर्च स्क्रीन में जाऊं। ओके, so what I'm gonna do in the home screen, I'm gonna create a math high order function। I will call it as on uh, on click। अभी just to give it just to give it a better name, I will call it as navigate to सर्च स्क्रीन। ओके, मैंने अपने फंक्शन का नाम ये दिया। ओके, विच विल बी ऑफ टाइप नथिंग। ओके, एंड इट विल रिटर्न द यूनिट। ओके, और मैंने इसको यहाँ पे कॉल कर दिया नेविगेट टू द सर्च स्क्रीन।
Okay. Now, uh, here I'm getting an error because I've introduced a new high order function. I will take it like this way. Okay. Now what I'm gonna do, क्योंकि मैंने ये मैनेजर बनाया है, what I'm gonna say, भाई ऊपर से डिमांड आई है, यूजर ने बोला है कि क्लिक करके हमें सर्च स्क्रीन में जाना है. So what I'm gonna do, I'm gonna do nav controller. Okay. And I'm gonna use this very handy method called navigate. Okay. नेविगेट किया. अब मैं इसको यहाँ पे राउट दूंगा कि जहां पे भी मेरे को जाना है. ओके. तो आई एम गोना से इट कि मेरे को आप सर्च स्क्रीन में लेके चलो. ओके. नाउ द हाउ द प्रोग्राम विल बी फॉलो. मैं इस बटन में क्लिक करूंगा. ओके. इस बटन में क्लिक करूंगा तो ये लैम्डा एग्जीक्यूट होगा. ये लैम्डा एग्जीक्यूट होगा तो नैव कंट्रोलर अपने नैव होस्ट की ग्राफ में चेक करेगा कि कहीं पे सर्च नाम का कंपोजेबल है कि नहीं. अगर है तो वो सर्च वाले स्क्रीन को पॉपुलेट कर देगा. ओके. इफ आई एम गोना रन दिस. Okay. And if I press this thing, so you can see welcome to home screen has been changed to welcome to the search screen. अगर मैं इसको क्लिक करूंगा nothing is happening. क्यों? क्योंकि मैंने उसके क्लिक पे मैनेजर को बोला ही नहीं है कि कुछ करना है. राइट. तो वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी. ओके. So this is how we manage generally navigation in our app. So let me know, क्या हमें ये मैनेजर कंट्रोलर के बारे में समझ में आया? क्या हमें नैव होस्ट और नैव ग्राफ के बारे में समझ में आया? लेट मी नो. दर्शनी शिवा हैव अंडरस्टूड इट. राज दीपक. Okay. So if I go back, okay, I am into the welcome screen. If I put it, tap on it, I am able to see the search screen. Okay. Harsh, are you able to see it working? Home screen को दबाया तो I am in the search screen. Okay. Now, similarly, we can do it for the profile as well. Okay. तो मैं क्या करूँगा, सर्च स्क्रीन में जाऊँगा. ओके. यहाँ पे मैं एक मेथड बनाऊँगा कि नेविगेट टू प्रोफाइल स्क्रीन. ओके. which will be of type this, which will return a unit. Okay. And on the button click, I will create this navigate to the प्रोफाइल स्क्रीन. ओके. क्योंकि मैंने इसको चेंज किया है तो जहाँ पे भी यूज हो रहा है मेरे को उसको वो पैरामीटर देना पड़ेगा. आई कैन माय बैड. ओके. आई कैन डू नेविगेट टू द प्रोफाइल स्क्रीन एंड ओपन द लैम्डा. ओके. बट क्योंकि मेरे पास एक ही लैम्डा है एंड आई नो दैट इट इज रिगार्डिंग द navigate to search screen option only, so I will do this. Okay. So internally ये जब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, internally it is calling this method. Okay. अगर ये चीज कंफ्यूज कर रही है तो what I'm gonna do, इसको रिमूव करके, इसको नहीं, इसको रिमूव करके I'll do this. I will say navigate to search screen. This is a lambda and I will move the implementation to this. Okay. Similarly I can do for this as well. Navigate to profile screen. Okay. And I will do nav controller dot navigate. अब मेरे को कहाँ डालना होगा, यहाँ पे क्या वैल्यू डालनी पड़ेगी अगर मेरे को प्रोफाइल में जाना है तो? You can write over the chat. What about others? Yes. Okay. So I will type the profile. Okay. Now यहाँ पे आप देखोगे राज ने प्रोफाइल लिखा, शिवा ने प्रोफाइल लिखा, तुलिका ने प्रोफाइल लिखा पर पी को कैपिटल कर दिया. ओके.
तो मैं p को इसको कैपिटल कर देता हूँ. ओके, नाउ वी गोना रन दिस थिंग. ओके, देखते हैं कि छोटा सा चेन से क्या इशू आता है. ओके, आई एम गोइंग टू द लॉग कैट. ओके, ओके, मैं होम स्क्रीन में गया. अभी तक सब बढ़िया चल रहा है. मैं सर्च स्क्रीन में जाऊंगा. प्रोफाइल स्क्रीन में आ गए. नहीं हुआ क्रैश. द रीजन बीइंग कि अगर आप करेक्ट करेक्ट द रीजन बीइंग कि अगर आप यहाँ पे जो राउट दे रहे हो, ओके, और ये अगर इस कंपोजिबल में नहीं है, इसके ग्राफ में नहीं है, तो नैव होस्ट इशू जनरेट करेगा नेविगेटर को कि भाई आप पंजाबी ढाबा में पाव भाजी मांग रहे हो, नहीं मिलेगा. राइट, तो वो एरर थ्रो करेगा. राइट, तो शेफ क्या करेगा, मैनेजर क्या बोलेगा शेफ को कि यूट्यूब से देख के आप पाव भाजी बनाओ, वो पाव भाजी कभी अच्छी नहीं बनेगी. राइट, तो जनरली ये काइंड ऑफ इशू आएगा, हमें एक एक्सेप्शन आएगा कि आप जो देखना चाह रहे हो वो इस हमारे ग्राफ पे नहीं मिलता है. ओके, आई बिलीव कि कंपोजिबल इज स्मार्ट इनफ कि इसको इसने लोअर केस में डिनोट कर लिया एंड प्रोसेसिंग विद इट. ओके, बट we'll gonna try to crash it and see how difference it will. ओके, for time being आपने देखा मैं होम स्क्रीन में हूँ, मैं सर्च स्क्रीन में गया और मैं प्रोफाइल स्क्रीन में जा पा रहा हूँ. राइट, इन बिटवीन आप देख सकते हो द एनिमेशन, द फेड इन फेड आउट एनिमेशन इज बीन हैपनिंग ऑटोमेटिकली फ्रॉम द एंड्रॉइड डिफॉल्ट वैल्यू गिवन. ओके, बट हम इसको भी अभी चेंज करेंगे. ओके, नाउ दैट वाज अबाउट द नेविगेशन कंपोनेंट्स. ओके, हमने समझा कि नैव ग्राफ क्या है, नैव कंट्रोलर से हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और नैव होस्ट जो सारे कंपोजेबल्स को होस्ट करता है और जब भी कोई चेंजेस होता है उसको वो रिफ्लेक्ट करता है. ओके, नाउ जनरली हम सिर्फ नेविगेशन, जनरली हमारे ऐप में हम नेविगेशन करते हैं, बट कभी कभी एक ऐसा सिनेरियो आता होगा कि जिस ग्राफ जिस स्क्रीन से हम नेविगेट कर रहे हैं दूसरे स्क्रीन में, हमें उस स्क्रीन का कुछ पिछला डेटा चाहिए. ओके, बेसिकली जब मैं स्क्रीन ए टू स्क्रीन बी जा रहा हूँ, स्क्रीन ए में मैंने कुछ चीज सिलेक्ट की हुई है, तो वो मेरे को स्क्रीन बी में प्रोसेस करना है. ओके, तो आई जस्ट शोकेस यू विद एन एग्जांपल. जैसे मैं होम स्क्रीन में हूँ, मैं स्क्रीन में नेविगेट किया, यहाँ पे मेरे पास लिस्ट है कुछ आइटम्स की. मैं जैसे ही रोनाल्डो पे क्लिक कर रहा हूँ, आई वांटेड कि मैं रोनाल्डो की प्रोफाइल देख पाऊँ. राइट, तो मैंने रोनाल्डो को क्लिक किया एंड रोनाल्डो की प्रोफाइल खुल गई है. ऑल्दो इट इज जस्ट शोइंग द टेक्स्ट फॉर द सिंप्लिसिटी पर्पस, बट मैं अब रोनाल्डो का की लेके, आईडी लेके, एपीआई कॉल करके यहाँ डेटा दिखा सकता हूँ. राइट, बट मैं मार्सेलो को क्लिक कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ रोनाल्डो की प्रोफाइल नहीं दिखाऊंगा. राइट, मेरे को मार्सेलो के ही प्रोफाइल दिखाना है. राइट, सो generally to process this small data, we generally send one piece of data from to another screen which we call arguments. Okay, and access it in our composable. Okay, so let's see how we can do that. Okay, so uh, we learn about controllers and the host and the composables. Okay, now we're gonna learn about the arguments. Okay, now कुछ चीजों को हम थोड़ा सा एनहेंस कर सकते हैं अभी करेंट इम्प्लीमेंटेशन में. ओके, ये हटाते हैं, ग्रीटिंग्स का काम नहीं है, ये हटाते हैं. मैं एक इनम क्लास बनाऊंगा, आई विल कॉल इट एज डेस्टिनेशन. ओके, इसके बहुत वेज हैं, हम इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू कीप इट सिंपल. मैं एक होम बनाऊंगा. ओके, मैं एक सर्च बनाऊंगा.
ओके, एंड मैं प्रोफाइल बनाऊंगा. ओके, now instead of providing this string where अगर मैं home को harm लिख दूं, okay, so this thing can leads to issue. So what I'm gonna do, I'm gonna define it at one place, okay, and use it across the project. Okay, so इससे consistent रहेगा project, right, and गलती होने के chances कम होंगे. Okay, like this, like this. इसको अपन सर्च, बहुत बढ़िया, इसको हम लोग सर्च करके ये कर सकते हैं. ओके, सिमिलरली आई कैन डू दिस, एंड इंस्टेड ऑफ होम इट शुड बी प्रोफाइल. ओके, इंस्टेड ऑफ प्रोफाइल इट शुड बी लाइक दिस. ओके, now what we gonna do, we gonna learn how we can pass argument from one screen to another. ओके, अगर मैं अपना ऐप खोलूं, मैं क्या चाहता हूं कि मैं सर्च स्क्रीन से प्रोफाइल स्क्रीन में आऊं. Sorry, Raj, I didn't get your point. What you wanted to get me repeated? Are you talking about this enum class? Okay. So generally मैंने क्या किया, जैसे हम enums के बारे में पढ़े थे last time, right? Where we wanted to do certain operation at certain fixed values, okay, and nothing apart from that. Acha, that was for the scene class, but basically some set of constants where my things will be revolved. So we generally create a enum, right? Defining them. So अब मेरे को पता है मेरे ऐप में तीन ही स्क्रीन है, होम, सर्च और प्रोफाइल. तो मैंने उसका एक क्लास बना लिया, ओके, होल्डिंग सम डेटा. ओके, एंड मैंने rather than giving a static screen like static name like this, मैं क्या करूँगा, मैं enums का यूज करके जहाँ पे भी मैं चाहता हूँ ये नेम वाला फंक्शनैलिटी कॉल कर लूंगा. तो मैं जब इस नेम को क्लिक करता हूँ तो ये होम जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, होम, ओके, इसको वो सॉरी, इसको वो ऐसे स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर देता है. ओके, सो दिस इज अ फंक्शनैलिटी ऑफ दिस इनम क्लास. ये जो नेम प्रॉपर्टी आप देख रहे हो ना, ये इनम क्लास से आ रही है. हमने ये डीपली डिस्कस किया हुआ है. ओके, सो कमिंग टू हियर, मैंने जनरली एरर्स को बचाने के लिए ये चीजें की हुई है. तो हम होम से जा रहे हैं सर्च में, सर्च से जा रहे हैं प्रोफाइल में. ये वाली चीज छूट गई, तो हम करेंगे डेस्टिनेशन डॉट सर्च डॉट नेम. ओके, नाउ हमें सीखना है कि हम आर्ग्यूमेंट्स कैसे सेंड कर सकते हैं. ओके, सो इन्होंने कहा है, अच्छा, कोई वेब डेवलपमेंट से आता है क्या? हैव एनीवन डन एनी वेब डेवलपमेंट इन देयर पास्ट? जनरली हम कोई भी वेबसाइट देखते हो तो आप देख सकते हो कि अगर आप इस लिंक को ही देखोगे तो आप देख सकते हो कि ये लिंक मेरे को बहुत सारी चीज बता रही है. अगर मैं इस लिंक को कॉपी करके यहाँ लाऊं टेक्स्ट में, इसको तोड़ूं, ओके, तो सबसे पहले तो ये बता रही है कि कौन सा कॉल है, राइट, ये एचटीटीपी प्रोटोकॉल है. फिर ये बोल रहा है कि एंड्रॉयड डेवलपर्स का इसको ब्लैक कर देते हैं, रेड दिख नहीं रहा है, तो इसको एक्सेल कर देते हैं. ओके, तो ये क्या बोल रहा है कि एचटीटीपी का कॉल है android.com की वेबसाइट में. फिर इसको तोड़ के बोल रहा है कि डेवलपर के लिए है. फिर इसको तोड़ के बोल रहा है कि यूआई लेयर के लिए, यूआई में बोल रहा है कि कंपोज के लिए, कंपोज में बोल रहा है नेविगेशन के लिए है, और नेविगेशन में बोल रहा है कि क्रिएट नैव होस्ट के लिए, राइट. तो दिस इज एन पाथ, राइट. हमने एक पाथ क्रिएट किया है, ओके, विच इज डायनामिक.
अगर मैं डेवलप को टेस्टिंग कर दूंगा तो मैं दूसरी वेबसाइट में चले जाऊंगा, राइट? जनरली हाउ वी मैनेज अवर वेबसाइट। सिमिलरली द थिंग्स वर्क इन एंड्रॉयड एज वेल। हम जनरली एक यूआरएल पाथ काइंड ऑफ सेटअप करते हैं जहां हम बेसिक destination point along with the uh, data type that you wanted to transfer, हम लोग वो देते हैं। ओके, so we'll just gonna see it in the example now। मैं क्या चाहता हूँ कि मैं सर्च से कुछ नाम उठाऊं और उसको प्रोफाइल स्क्रीन में दिखाऊं, राइट? तो सर्च से नाम दिखाने के लिए मेरे को एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, और लिस्ट के लिए मेरे को चाहिए डेटा, लिस्ट ऑफ पीपल, ओके, विच इज ऑफ टाइप लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, ओके। और मैं इसको जनरली अपने आर्ग्यूमेंट्स में ही ले लेता हूँ, ओके। एंड मैं इसको दूंगा रोनाल्डो, ओके, मैं इसको दूंगा मार्सेलो, ओके। आप अपने फेवरेट प्लेयर्स नाम दे सकते हो, वी कैन टेक इट अप। इसको लूंगा मैं मॉडरिच, ओके। इसको लूंगा मैं नाचो, नाचो तो तुम लोग खाने वाला नाचो समझोगे। क्या नाम दे, क्या नाम दे, राहुल दे देते हैं, ओके। कूल, ओके। नाउ आई एम गोना create a lazy column, okay। I'm gonna use this items method provided by them. I'm gonna create a list of people, okay। Open the lambda, I will give the baller name, okay। In the text I will showcase the baller name, okay। In the modifier I will give a padding of, let's say, 8 dp around, I will import it, okay। I will format it, I will provide clickable, okay, okay। And instead of calling the lambda function on a button click, मैं क्या करूंगा, navigate to the profile screen without argument। इसको अपन ग्लोबली चेंज करते हैं, ओके। नेविगेट टू द प्रोफाइल स्क्रीन विदाउट आर्ग्यूमेंट, ओके। मैंने एक फंक्शन ये बनाया, मैं एक फंक्शन ये बनाऊंगा नेविगेट टू प्रोफाइल स्क्रीन, ओके, with argument, okay। And instead of passing the empty lambda, I will pass the argument of type string, okay। और जब भी ये टेक्स्ट क्लिक होगा तो मैं नेविगेट करूंगा बेस्ड ऑन द स्ट्रिंग इट इज बीन गिवन, ओके। सो नेविगेट टू द प्रोफाइल स्क्रीन विथ आर्ग्यूमेंट, ओके। और स्ट्रिंग में मैं क्या कॉल करूंगा, स्ट्रिंग में मैं कॉल करूंगा बॉलर नेम, ओके। तो अगर मैं आपको स्क्रीन दिखाऊं और बंद ना करते हुए अगर पीछे जाऊं तो आप देख सकते हो कि हियर वी हैव अ लिस्ट ऑफ नेम्स, एंड मैं जिसको क्लिक कर रहा हूँ क्लिकेबल उसके ऊपर ही डिनोट हो रहा है, जैसे आप देख सकते हो उसके ऊपर क्लिकेबल डिनोट हुआ है। मैं क्लिक करूंगा और वो नाम को मैं दूसरे स्क्रीन में पास करूंगा, राइट? सो आई एम क्रिएटिंग अ डिफरेंट फंक्शन, ओके। नाउ आई विल गो टू द सर्च स्क्रीन। अब क्योंकि ये एरर दिखा रहा है क्योंकि मैंने एक और लैम्डा इंट्रोड्यूस किया है, so I will name as navigate to profile screen with argument, okay। And I will do nav controller dot navigate destination name slash the item I am getting, okay। तो मैं इसको स्ट्रिंग में इंटरप्लोट इसको चेंज कर लेता हूँ लाइक दिस, एंड इसको मैं कुछ ऐसा दे देता हूँ, ओके। एंड ये भी अपना छूटना नहीं चाहिए, ओके। सो
this is an format how we do the navigation. Okay, so I wanted to navigate to the profile screen with the name of that person that I wanted to uh, see the details of. Okay, so here is the destination and here is the argument followed by a slash. Okay, अब क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको ऐसे डिफाइन किया हुआ है, तो आई हैव टू मेक चेंजेस ओवर हियर एज वेल. ओके, so now the parent route of this thing will gonna change and look like this. Okay, so profile इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं. ओके, and instead of it I will give it a name profile id. ओके, अब क्योंकि मैंने ये आर्ग्यूमेंट बनाया है तो मेरे को कंपोजेबल को थोड़ी इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि आर्ग्यूमेंट किस टाइप का है, क्या प्रॉपर्टीज होल्ड करता है. तो आई विल कॉल दिस आर्ग्यूमेंट ऑप्शन. ओके, आई विल गिव अ लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट, nav argument, name will be profile profile id. Okay, which gonna be a type of string type. ओके, सो जनरली आप पूछोगे ये क्या फलकाना ढिमकाना हो गया यहाँ पे. द थिंग इज कि जरूरी नहीं है कि आदमी एक ही आर्ग्यूमेंट भेजेगा. हो सकता है कि आदमी प्रोफाइल आईडी के साथ साथ प्रोफाइल नेम भी भेजे फॉर कंफर्मेशन, राइट. तो जैसे आपने यहाँ पे प्रोफाइल आईडी के लिए डिफाइन किया हुआ है कि वो स्ट्रिंग टाइप होगा, वैसे ही आप प्रोफाइल नेम के लिए भी करोगे, राइट. And generally this argument will turn out to be from single argument to a list of argument. Okay, but keeping it simple, generally we generally pass only one argument from one screen to another, but if we wanted to pass multiple arguments we can also do that. And then we have to define for each argument कि भाई आप कौन से आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हो, वो कौन सा टाइप होगा एंड अदर थिंग्स. ओके, मैं चाहूँ तो इसको डिफॉल्ट वैल्यू मैं एम्प्टी भी दे सकता हूँ. ओके, सो समथिंग लाइक दिस. ओके, सो हमने कंपोजेबल को नया राउट बता दिया कि प्रोफाइल में प्रोफाइल आईडी आएगा तो आपको एज अ स्ट्रिंग टाइप ट्रीट करना है. अगर कुछ वैल्यू नहीं आई तो इट विल बी एम्प्टी. ओके, नाउ व्हाट आई एम गोना डू, यहाँ पे आई एम गोना क्रिएट प्रोफाइल of type string. Okay, and I'm gonna create a text. Okay, and I'm gonna populate the value of text here. This is profile screen. Okay, cool. नाउ यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपने प्रोफाइल वाला चीज इंट्रोड्यूस किया तो मेरे को प्रोफाइल की वैल्यू दो. तो व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना डू 8 dot argument which can be of type empty get string of type profile id. If it gonna be empty in any way, take the empty value. Okay, अब मेरे को ऑनेस्टली बताओ किस किस के सर से बाउंसर गया ये वाला कॉन्सेप्ट जो भी हमने किया. रिएक्ट विद अ थम्स अप और बेसिकली बेटर दिस वन. कूल, सो कूल. सो तुलिका, व्हाट वी आर डूइंग, हमने अभी तक पढ़ा था कि ये कंपोजेबल
तब इन्फ्लेट करता है अपना कंटेंट जब हम उसको वो रिस्पेक्टिव राउट दे। करेक्ट? यहाँ तक समझ में आया? हाँ। अब क्योंकि हम सर्च स्क्रीन से प्रोफाइल स्क्रीन में जा रहे हैं, पासिंग एन आर्ग्यूमेंट, मतलब मेरे को उस स्क्रीन में नेविगेट करते करते कुछ डेटा भी दिखाना है, राइट? तो उस चीज को हैंडल करने के लिए अब रेदर देन गिविंग इट अ प्लेन नेम, मैं बोलूंगा कि आपके पास अभी जो भी डेटा आएगा ना, उसमें एक प्रोफाइल आईडी भी अटैच्ड होगा, राइट? तो मैंने राउट के नाम को उस नाम से चेंज कर दिया कि इस टाइप की चीजों को आपको हैंडल करना है। इतना समझ में आया? कूल। अब क्योंकि मैंने इसको प्रोफाइल आईडी दिया है, तो हो सकता है आदमी प्रोफाइल आईडी ना भेज के स्ट्रिंग आईडी ना भेज के इंट आईडी भेज दे। मान लो मेरे को निकेत चाहिए था, आगे वाले डेवलपर ने उसको ये भेज दिया, तो मेरा तो लॉजिक टूट जाएगा, राइट? या मान लो उसने ये ना भेज के एक कस्टम क्लास ही भेज दिया, ओके, कि नहीं भाई तू ये पूरा चीज ले ले, राइट? तब भी चीजें टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो हम अपने कंपोजेबल को ये स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि जो प्रोफाइल आईडी है ना, वो जनरली स्ट्रिंग टाइप का होगा। जो भी इसको आप भेजोगे, ये स्ट्रिंग टाइप का होगा, ओके? जैसे ही हम अपने प्रोफाइल में आर्ग्यूमेंट्स को प्रोफाइल और उसका टाइप देते हैं, सिमिलरली मैं अपने आर्ग्यूमेंट्स को डिफाइन करके उसका टाइप डिफाइन कर रहा हूँ, ओके? इतना समझ में आया? अब क्योंकि चीजें फटे ना, चीजें खराब ना हो, मैंने उसको एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दिया कि अगर आदमी प्रोफाइल स्क्रीन में जाना चाह रहा है और बाय चांस कुछ पास नहीं कर पाया, तो आप इसको एम्प्टी शोकेस कर देना। ये समझ में आया डिफॉल्ट वैल्यू? कूल। अब ये लिस्ट ऑफ ये जो मैंने आर्ग्यूमेंट्स में लिस्ट ऑफ जो चीजें भेजा है और ये जो चीज मैंने डिफाइन किया है, दिस इज एन सिंटेक्स वे ऑफ राइटिंग थिंग्स एंड डिफाइनिंग एन आर्ग्यूमेंट, ओके? अब क्योंकि ऐसा भी केस हो सकता है कि मान लो आप बहुत बड़ा स्टॉक मार्केट मैनेज करने के लिए ऐप बना रहे हो और यूजर क्लिक में आपको बहुत सारी चीजें करना हो, आपको ग्राफ आईडी भेजना हो, सॉरी, स्टॉक आईडी भेजना हो, आदमी ने किस ग्राफ में सिलेक्ट करके रखा था, क्या वैल्यू सिलेक्ट करके रखा था, वो भेजना हो। मान लो आर्ग्यूमेंट एक ना हो के 10 हो, तो उस 10 आर्ग्यूमेंट को डिफाइन करने के लिए हमें लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स करना पड़ता है। बट आप देख सकते हो इस पूरी लिस्ट में, ओके, अगर मैं इस लिस्ट का आइटम दिखाऊं, पूरी लिस्ट में, ओके, मैंने एक ही आइटम को डिफाइन किया हुआ है, ओके? अगर मेरे पास दूसरे आइटम्स हो जाते हैं, तो मैं फॉलोइंग इस वे में डिफाइन करते जाऊंगा, ओके? मान लो प्रोफाइल आईडी ना हो के यूनिक आईडी हो गया, ओके? यूनिक आईडी हो गया, यूनिक आईडी स्ट्रिंग ना हो के इंट टाइप की होगी, एम्प्टी ना हो के ये हो गई, ओके? सो आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्टेड, ओके? अब क्योंकि मैंने यहाँ प्रोफाइल आईडी के बाद यूनिक आईडी डिफाइन किए, तो मेरे को उसको कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा, ओके? लेट्स से समथिंग लाइक दिस, ओके? तो तुलिका एंड अदर्स, अभी हमें समझ में आया कि हम क्या कर रहे हैं? कूल। तो कमिंग बैक टू दिस एग्जांपल, हमने http developers डॉट android.com में जाएंगे तो होम पेज खुलेगा एंड्रॉयड डॉक्यूमेंट्स का। फिर मैं डेवलप में जाऊंगा तो डेवलपमेंट सेक्शन दिखाएगा, ओके? फिर मैं उसमें यूआई को क्लिक करूंगा तो मेरे को रेदर देन दैट यूआई वाला सेक्शन दिखाएगा, ओके? फिर यूआई में भी कंपोज करूंगा तो कंपोज से रिलेटेड दिखाएगा, राइट? तो जैसे जैसे मेरा आर्ग्यूमेंट बदलते जा रहा है, मेरा आउटपुट बदलते जा रहा है, ओके? बट हम सिस्टम को कैसे बताएंगे कि हमें कंपोज में जाना है, ना कि फ्रैगमेंट में, ना कि एक्टिविटी? तो हमें उसको कहीं ना कहीं एक वे डिफाइन करना पड़ेगा, राइट? तो हमने ये पाथ वेस को एंड्रॉयड में भी इम्प्लीमेंट किया है, गेटिंग इंस्पायर फ्रॉम द वेब पेजेस, ओके, हाउ दे वर्क, ओके? कूल।
अब मेरे को बताओ, क्या इतना ब्लॉक ऑफ कोड हमें समझ में आ गया? व्हाट वी एम डूइंग हियर इन दिस पार्ट, एवरीवन? व्हाट अबाउट राज ओनकार? ओके, नाउ अब मैं क्या बोल रहा हूँ इस लाइन नंबर 64 के द्वारा, कि आप देखना, हर एक कंपोजेबल के साथ मेरे को एक लैम्डा मिल रहा है। ओके, अगर मैं इसको खोल के दिखाऊं तो मेरे को लैम्डा मिल रहा है, विच इज समवॉट टॉकिंग अबाउट दिस नैव बैक स्टैक एंट्री। ओके, अब आपको ध्यान होगा, जब मैंने आपको पहले नेविगेशन के बारे में बताया था, और मैंने बताया था कि एक स्क्रीन के ऊपर और सारी स्क्रीन आते जाएगी, तो वो एक स्टैक में इकट्ठा होते जाएगी, राइट? ये एक स्टैक है, और स्टैक में वो इकट्ठा होते जाएगी आईडी वाइज। ओके, नाउ हम इस लाइन ऑफ कोड से क्या कहना चाहते हैं अपने एंड्रॉयड ऐप को, कि आप जब भी प्रोफाइल स्क्रीन दिखाओ, ओके, आप नैव स्टैक में जाओ और जाके सर्च करो कि प्रोफाइल आईडी नाम का कोई आर्ग्यूमेंट है कि नहीं, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, राइट? आप वो पूरे सिस्टम में जाके देखेगा कि प्रोफाइल आईडी नाम का कोई आर्ग्यूमेंट है क्या। आर्ग्यूमेंट होगा तो इस प्रोफाइल की वैल्यू सेट कर देगा, अगर आर्ग्यूमेंट नहीं होगा तो वो उसको नल वैल्यू या एम्प्टी वैल्यू सेट कर देगा। ओके, तो जनरली हम अपने बैक स्टैक से इस आईडी को उठा रहे हैं। तो हमें क्या इतना समझ में आया इस लाइन से कि हमने क्या करना चाह रहे हैं? ओके, अब ऐसा नहीं है कि ये स्पेसिफिक इसी इसी राउट के लिए होगा, क्योंकि मैंने इसको स्पेसिफाई किया है। आपको आ, आपके बैक स्टैक का ऑब्जेक्ट आपको हर कंपोजेबल के लैम्डा में मिलेगा। ओके, जैसे आप देख सकते हो, इट इज रिफ्लेक्टिंग टू नेव बैक स्टैक। बेसिकली जो आपका जो स्टैक बना हुआ है ओएस लेवल में, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, राइट? हर कंपोजेबल के लैम्डा में ये मेरे को मिलता है। ओके, नाउ we are already stretched the limited time, but as we have started little late, let's continue. It's gonna take couple of more minutes. Okay, अब हमने क्या किया है, होम स्क्रीन से सर्च स्क्रीन में आए, बहुत बढ़िया, ये प्लेन प्लेन चल रहा है। सर्च स्क्रीन में मेरे को लिस्ट ऑफ आइटम्स मिल रहे हैं, मैंने लिस्ट ऑफ आइटम्स में से एक प्रोफाइल को सिलेक्ट किया। अब मैं प्रोफाइल को सिलेक्ट किया हूँ, तो मैं प्रोफाइल स्क्रीन की राउट में जाऊंगा। बहुत बढ़िया, मैं प्रोफाइल स्क्रीन की राउट में जा रहा हूँ, तो मैंने चेक कर लिया कि मेरे नैव ग्राफ में क्या वो वाला कंपोजेबल है जो इस राउट को मैनेज कर रहा है। तो हमने इसको भी डिफाइन कर दिया, राइट? और मैं ये भी देख रहा हूँ कि प्रोफाइल स्क्रीन में जाने से पहले क्या मेरे को प्रोफाइल आईडी जो मैंने पास की थी वो अवेलेबल है कि नहीं। ओके, वो भी हमने मैनेज कर लिया, राइट? अब इसको हम रन करके देखते हैं चल रहा है कि नहीं। ओके, रन किया मैंने, लॉग कैट खोला। ओके, लॉग कैट खोला। ओके, नाउ इसको अगर मैं स्क्रीन को बड़ा कर दूं, ओके, वेलकम स्क्रीन से होम स्क्रीन गए, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब मैं यहाँ से रोनाल्डो को सिलेक्ट करूंगा। देखो, ऐप फट गया, राइट? द रीजन बीइंग, इट इज सेइंग illegal argument exception, navigation destination that matches request profile at the rate sorry profile slash Ronaldo cannot be found in navigation graph। ओके, सो इसका कहना ये है कि आप जहां नेविगेट करना चाहते हो वो इस ग्राफ में, जो आपने नया पोस्ट ग्राफ बनाया है, या एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ओके, तो ये तो इशू हो जाएगा, एंड ये इशू हो गया, इसको कुछ मिला नहीं तो ऐप क्रैश हो गया, राइट? तो व्हाट वी हैव टू डू, मैंने ये जानबूझ के किया था, ओके, जस्ट टू शोकेस दिस एरर। जनरली हमें कंपोजेबल डिफाइन करना पड़ता है ना, तो हमें उनको कर्ली ब्रैकेट्स में देना पड़ता है। ओके, तो मैंने ये जानबूझ के किया था जस्ट टू शोकेस कि हम अगर इसको अच्छे से डिफाइन ना करें तो आपको क्रैश आ सकता है, राइट?
अरे शिवा ने सुनील छेत्री कहा, बहुत बढ़िया। सुनील छेत्री आज रिटायरमेंट ले लिए, मतलब आज ही उन्होंने अनाउंस किया है। यू कैन हैव अ लुक। ओके, नाउ मैंने ये चीज को फिक्स कर दिया। मैं अपना एमुलेटर ओपन करता हूँ। ओके, इसको वापस रन करते हैं। एमुलेटर बहुत छोटा हो गया। यहाँ गए, इसको डिलीट किए। ओके, वेलकम टू होम स्क्रीन, वर्किंग फाइन, taking selecting moderate. Now we are showing this is moderate screen. Okay, so you can see how we have navigated one value to the other value, to the other screen, and using that value. Okay, अगर मैं back जाऊंगा, so I'm again into this screen. Okay, and if I select Ronaldo, now I'm seeing the profile of the Ronaldo. Okay, जैसे इंस्टाग्राम में कैसे होता है, एक आपका होम स्क्रीन रहता है, राइट, जहाँ आप सबकी स्टोरी देखते हो। फिर आप सर्च स्क्रीन में जाते हो तो आपको किसी की प्रोफाइल दिखती है, राइट। लड़के लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं। प्रोफाइल दिखती है, फिर उनमें क्लिक करते हो, फिर प्रोफाइल जाके आप डीएम करते हो, राइट। सो सिमिलरली आई बिल्ड समथिंग लाइक दिस। होम स्क्रीन से हम सर्च स्क्रीन और एक्सप्लोर स्क्रीन में आए। वहां पे मैंने देखा भाई मार्सेलो ब्राजील शिफ्ट हो गया है। मैंने उनकी स्क्रीन में देखा कि क्या हो रहा है, और फिर मैं उनसे डीएम करके पूछूंगा भाई क्या कमी रह गई थी स्पेन में। ठीक है, सो द थिंग्स कैन बी अचीव likewise in our Android app. Okay, this is how you uh, build your navigation system in your Android app. Okay, अब किसी ने भी नहीं पूछा सर आप इतनी बड़ी रामायण क्यों कर रहे हो, आप ये कॉल बैक क्यों बना रहे हो, आप होम स्क्रीन में नैव कंट्रोल, नैव कंट्रोलर। ओके, ऑफ टाइप नैव होस्ट कंट्रोलर। ओके, नैव कंट्रोलर, it will be of type nav host controller. Okay, now instead of this I will do nav controller like this, home screen, or instead of doing this I will do this, I will do this, and I will do nav controller dot navigate, and I will then destination dot search screen dot name. मैं ये भी कर सकता था, राइट, एंड दिस इज ऑल्सो वैलिड। ओके, हाँ शिवा मैं आपको कोड भेज दूंगा। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वैलिड, बट एंड्रॉइड में या जनरली किसी भी जेवीएम काम में आप ये चाहोगे आपका जितना कंट्रोल बाहर से हो, राइट, जितना कंट्रोल आपका बाहर से हो उतना अच्छा। अब आप इस नैव कंट्रोलर को दूसरे स्क्रीन में पास कर दोगे, फिर तीसरे स्क्रीन में पास कर दोगे, तो इट कैन लीड टू इनकंसिस्टेंसी, राइट। तो मैंने यहाँ पे एक लैम्डा बना लिया, और उस लैम्डा को जो मेरे को चीज़ें यहाँ एग्जीक्यूट करनी है, मैंने कहाँ एग्जीक्यूट कर ली, जहाँ मैंने नैव कंट्रोलर को डिफाइन किया हुआ है, राइट। सो इस चीज़ को हम और बेटर वे में देखेंगे, आ, इस चीज को हम और बेटर वे में देखेंगे, बट दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके, so for time being I'm just gonna delete it so you don't get confused. Okay, now this composable का फायदा ये है कि it provide lots of flexibility। अगर मैं यहाँ पे नहीं जाके, अगर यहाँ पे जाके लिखूं एंटर ट्रांजिशन, ओके, तो मेरे को ये ऑप्शन दे रहा है कि आप जब भी एंटर करो और एग्जिट करो तो आप कुछ एनिमेशन दिखा सकते हो। ओके, सो आई विल यूज दिस स्केल आउट। ओके, एंटर में स्केल इन। ओके, एनिमेशन पैक आई विल यूज द ट्विन बिल्डर। ड्यूरेशन में दे दूंगा 2000 मिली सेकेंड्स का, और डिले में दे दूंगा 100 मिली सेकेंड्स का। ओके, सिमिलरली आई विल डू फॉर द एग्जिट। ओके, स्केल इन में स्केल आउट में इस्तेमाल करूंगा, एनिमेशन स्पेक ट्विन दूंगा, अगेन इट विल बी 2000 एंड डिले विल बी 100 मिली सेकेंड। ओके,
अब मैं स्केल आउट, स्केल इन, ये ऑफ टाइप एंटर ट्रांजिशन है। ओके, ये एनिमेशन के अंदर आते हैं। ओके, और ऐसे और भी सारे एनिमेशंस हैं। ओके, जैसे फेड इन है। ओके, फेड आउट है। ओके, और क्या क्या है, स्लाइड इन है। ओके, स्लाइड इन इनटू कंटेनर है। ओके, ये सारे एनिमेशंस आपको प्री बिल्ट मिल जाते हैं थ्रू कंपोज। आपको कुछ नहीं करना है। आपको इस स्कोप के अंदर अगर मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हो, एनिमेशन कंटेंट ट्रांजिशन स्कोप, इसके अंदर आप एक एंटर ट्रांजिशन टाइप का एनिमेशन कर रहे हो। ओके, नाउ अगर ये चीजें सर के ऊपर से जा रही है, डोंट वरी, एनिमेशन इज अगेन अ ब्रॉड टॉपिक इन जेटपैक कंपोज। अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट फॉर द नेविगेशन पार्ट आप बहुत इजीली इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जैसे अगर मैं इसको एक और बार करके दिखाता हूँ, किसी भी कंपोजेबल में राउट्स के बाद आप एंटर ट्रांजिशन का ब्लॉक खोल के आप अपना नेविगेशन दे सकते हो, सॉरी, आप अपना एनिमेशन दे सकते हो। ओके, इट ऑल्सो वर्क्स विद द आर्ग्यूमेंट एज वेल। ओके, एंटर ट्रांजिशंस में यहाँ से दे सकता हूँ। फॉर टाइम बिंग व्हाट आई एम गोना डू, आई एम जस्ट गोना कॉपी इट। ओके, आई विल पेस्ट इट हियर, आई विल पेस्ट इट हियर। ओके, अब इसको रन करते हैं। ओके, वेलकम टू होम स्क्रीन से मैं अगर प्रोफाइल स्क्रीन में जाऊं तो आप देख सकते हो स्केल इन और स्केल आउट वाला एनिमेशन हो रहा है। अगर मैं बैक जाऊं तो देखो, आपने सिर्फ 3 लाइन में एनिमेशन को इम्प्लीमेंट कर लिया यूजिंग जेटपैक कंपोज, राइट? स्केल इन से स्केल आउट, स्केल इन से स्केल आउट, राइट? स्केल आउट से स्केल इन। ओके, so you can achieve this animation and lots of other types of animation through this enter and exit एनिमेशन। आप चाहो तो खुद का भी एनिमेशन बना सकते हो। ओके, कूल। So we talked about arguments. Okay, we talked about the transition animation. Okay, we talked about the backstack, कि कैसे वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक जाता है और कहाँ से हम डेटा फेच कर सकते हैं। ओके, so we talked about the navigation components. I think till now you have all the information to implement any navigation uh, any navigation system in your app। और आप अगर आप किसी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स को पढ़ते हो तो आप वहां पे भी समझ जाओगे कि नेविगेशन कैसे काम करता है। ओके, सो दैट वाज प्रीटी मच इट फ्रॉम माय एंड। जैसे शिवा को एक क्वेश्चन है कि हाउ दे वांटेड टू गेट दिस कोड। शिवा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है गूगल कोड लैब्स। ओके, यहाँ आना है। ओके, यहाँ पे सर्च करना है जेट पैक कंपोज नेविगेशन। 1 घंटा 40 मिनट का यहाँ पे आपको पूरा कोड लैब मिल जाएगा। ओके, एंड आप यहाँ से स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हो कि आप कैसे चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, राइट? तो मैं आपको इस कोड लैब का लिंक दे देता हूँ। ओके, एंड यू ऑल कैन हैव अ लुक इनटू दैट। अच्छा, शिवा डॉक्स नहीं पढ़ता है। शिवा, आंख बंद कर लो, ये तुम्हारे लिए नहीं है। ओके, सो दिस इज प्रिटी मच इट फ्रॉम माय एंड। आई होप आज आपको बहुत सारी नया कॉन्सेप्ट, एक नया पर्सपेक्टिव सीखने मिला होगा एंड्रॉयड के लिए। आई होप आपकी क्यूरियोसिटी जगी होगी कि हाउ थिंग्स अलाइन इन द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। कंसेप्ट सेम है, बस लिखने का तरीका और ऑपरेटिंग सिस्टम्स अलग अलग है, राइट? सो आई होप यू हैव ऑल enjoyed the session today. Okay, and we'll meet you tomorrow with a new topic and new learning. Okay, if you have any questions, feel free to ping me over the group.
ओके, नॉट इन द डीएम। डीएम में मैं आंसर नहीं करूंगा, ग्रुप में करूंगा। ओके, ओके देन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड सी यू टुमारो। बाय बाय।